Welcome back. So we are going to take up cost audit part 2 today. Now let us start first with 1959. All of us are aware that 1959 was the year in which our institute got the formal recognition to the Act of Parliament. And in the last video, I also said that it was in 1965 that the process of maintenance of cost accounting records were brought in the Companies Act by T.T. Krishnamachari sir. Now, it took almost 4 years. That means I am giving you the dates so that some clarity you will understand in later presentations. 1959 came the existence of the institute. 1965, the year in which maintenance of cost accounting records were brought in the Companies Act, and 1969 was the year in which 4 cost audit orders, and if I remember properly, they all were related to cement industry, were issued by the government. Now, remember one thing, because we are now going to deal with the history and step by step how the developments in this field took place. So after 4 years of prescription in the books of accounts, 4 cost audit orders were issued. And the process was that pick and choose. It was not that this time in 1969, if one company has got the order, the next year also that company audit will be conducted. No, it was not like this. It was just a pick and choose situation, that this year, probably in 69, if I am doing it, maybe in the future years it won't be required to do. Maybe some other company will be brought in. So it was a hit and trial method. You can say it was purely the decision of a government to start the process by having a random selection, absolutely by the discretionary powers to whom audit should be conducted and should not be conducted. Now I will stop here itself, because those 4 cost audit, how it was conducted, who were the auditors, well, I can only say that during those days, only one firm which got registered as a partnership firm was possibly my firm, with a registration number of 1. So possibly we did those audits, and that's a history. I'm not getting into this. Now let us come back to the original concept, where, because unless we understand what is costing, it will be very difficult for all of us to understand that what cost audit and how it is to be conducted and where it has come from and how it has gradually developed from time to time. So let us first talk about costing. What is costing? It is simple thing. Any work when you start, it starts with a scratch. So imagine there were no formats available, no precedences were available, no guidance were available, and yet we were supposed to start the process. In any case, and I am talking about a decade back when this IFAC paper came in, and lot of development have taken place thereafter. एक बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है जो हमारे स्कूलों में भी पढ़ाते हैं, हमारे घर में भी पढ़ते हैं, और सबके माँ बाप भी समझाते हैं कि बच्चे कोई भी काम करना चाहो तो शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, बिना शुरुआत के अंत तो नहीं हो सकता. So you have to begin at some place. Now where to begin? Because there was nothing to begin with. So you have to start absolutely at a scratch level. अब जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो आप मान करके नहीं चल सकते कि मैं जो वो काम करूँगा वो बिल्कुल ठीक होगा, उसमें कमियां होंगी.
और उन कमियों को हमको कंटिन्यूसली ठीक करना होगा, क्योंकि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया और मैं हमेशा समझाता हूँ कि अकाउंट्स में और कॉस्टिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग में एक बेसिक डिफरेंस है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पोस्ट इवेंट एक्सरसाइज है, यानी इवेंट हो चुका होता है तब हम उसके ऊपर काम शुरू करते हैं, तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन कॉस्टिंग जो है वो डायनेमिक है, वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, बिल्कुल डायनेमिक एटमॉस्फेयर में काम करती है, क्योंकि प्रॉफिट ऐसे नहीं बनता। काम खत्म हो जाने के बाद गणित बैठा करके मैथमेटिक्स से यू कैन डिराइव द प्रॉफिट, बट यू कैन नॉट इमेजिन और डिफाइन ए प्रॉफिट ड्यूरिंग द डायनेमिक पीरियड. That is why the difference is always there and will always exist between financial accounting and cost accounting. So पहला रूल क्या है? आज के बाद whenever we are developing the model, that how I will be explaining to you, always remember one basic principle that we call it normally in the maturity level या costing maturity level में हम continuing maturity model जिसको हम बोलते हैं, कंटिन्यूम मैच्योरिटी मॉडल, उसका बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्सेप्चुअल स्टेज से, यानी कि जीरो लेवल पे, बेस लेवल पे वी टॉक अबाउट दी डी कॉन्सेप्ट. व्हाट इज ए डी कॉन्सेप्ट? डी कॉन्सेप्ट में सिर्फ तीन चीज़ होती है. जो आप कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, अगर किसी भी प्रोसेस पे भी आप शुरुआत करते हैं, तो सिर्फ तीन चीज़ों को ध्यान रखना है और वही तीन चीज़ें कॉस्टिंग पे लागू होती हैं. पहली चीज़ डिज़ाइन, डी फॉर डिज़ाइन. आप किसी भी चीज़ को पहले आप डिज़ाइन करेंगे ना, समझेंगे ना मुझे करना क्या है, कुछ दिमाग लगाएंगे, कुछ सोचेंगे. तो अगर कॉस्टिंग के स्टेज में अगर कोई इन्फॉर्मेशन जब नहीं थी या नहीं होती है या नई शुरुआत आप करते हैं, तो पहले आप पूरी चीज़ों को देखने के बाद एक अपने मन में एक डिज़ाइनिंग बनाते हैं कि मैं ऐसे 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 ये स्टेप लेकर के आगे बढ़ कर काम करूँगा. दूसरा, वंस यू कंप्लीट द डिज़ाइनिंग प्रोसेस, क्या करते हैं? दूसरा, उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं कि ठीक है, मैंने सोच लिया मुझे इसकी कॉस्टिंग ऐसे करनी है, मुझे ये काम ऐसे करना है. उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इम्प्लीमेंट करूँगा, खाली तो नहीं बैठूँगा, आई हैव टू इम्प्लीमेंट दिस. सो देयरफॉर आफ्टर डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन इज द सेकेंड पार्ट. एंड थर्ड, जब ये दोनों चीज़ें हो गई, अब जो रुक गया यहाँ पे वो फिर कॉस्टिंग नहीं हुई. आपने कोई चीज़ डिज़ाइन किया, कोई चीज़ सोची, उसके बाद से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, कॉस्टिंग वहीं से शुरू होती है. फिर कॉस्टिंग यहाँ तक नहीं हुई, यहाँ तक या तो मैथमेटिक्स है, इमेजिनेशन है, अकाउंटिंग है, ठीक है, लेकिन कॉस्टिंग तीसरे स्टेज पे शुरू होती है जहाँ पे शब्द है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. यानी कि अगर आपने कोई भी काम शुरुआत किया है तो वो शुरुआत करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस पर कंटिन्यूसली इम्प्लीमेंट करना उसको या इम्प्रूव करना उसको. दैट इज़ वेयर द कॉस्टिंग स्टार्ट्स. इट मीन्स in 1965 or in 69, once we started a work, we should be fully aware that it is a evolving process and we need to start at some place and continuously improve upon that. आज भी जब आप करते हैं कोई भी चीज़, many times a question is being asked, क्या रे इसमें तो क्या है, इसमें तो ये ठीक नहीं है, इसमें तो ये ठीक नहीं है, इसमें तो ये ठीक नहीं है. यही सबसे बड़ी ताकत है कॉस्टिंग की. दिस इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉस्टिंग, वेयर यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इम्प्रूवमेंट, always looking for dynamism. The moment you complete it and fit it into a straight jacketed manner, costing is not there. That is not costing. Because in this continuum improvement model or continuum costing models of the maturity level, सबसे important चीज़ क्या है? सबसे important चीज़ है to continuously extract the information with the maintenance of equilibrium between cost and profit.
तराजू होता है ना, तराजू इक्विलिब्रियम बनाने का, ऐसा नहीं है कि माई कॉस्ट शुड बी हायर देन द बेनिफिट और माई बेनिफिट शुड cannot be very high from the cost. So there has to be an equilibrium. That is what. And the catchword I am giving you today, always remember whenever you are starting this process, the catchword is optimization. Optimization at every level, optimization of every resource, and that is where on every value addition, on every value chain or every design, there are only three things. We are starting from the base where design, implement and continuous improvement upon that. If that continuous improvement is missing, it is not costing, it is dead, it's accounting. Right? If that you have understood, then watch two words. I have remembered these two words when we will have our next deliberation. Word number one, the word is, the catchword is optimization of everything, optimization of your activities. And second, more critical word is, always remember, in costing, you should not, or rather you should be aware about what not to do. NOT, not to do more then what you should know about what you are going to do. So always, because the moment you forget what not to do, you will be continuously doing the mistake. So never do the mistake. If you are repeating the mistake, then you are failing into costing, then you are financial accounting. But improvement, optimize, that is the costing. From 1969 I said 4 cost audit orders were issued and the process was selection, discretion, no continuity, just pick and choose. We will move in the next video where I will come from those 4 to the next level. But remember these maturity levels, because now I will take up the first maturity level in the next video. So 2 words, remember my friends. First, optimization, and second, don't repeat the mistakes. Know what you will not do rather than what you will do. Thank you for your support.